Hi all, welcome again. Yeah, let's continue with the session. Okay. Yeah, fine. So yes, in the yesterday's lecture, we have covered some of the important testing terminologies, right? Which in this, like we have covered exploratory testing, then ad hoc testing and monkey testing, right? And we also have covered the common points surrounding to all three type of testing. That is, there will be no documentation, there will be no plan, right? And it's an informal type of testing, as well as we are performing it randomly, right? So these are the similarities in between these three testing types. Okay, but when it comes to the objective and purpose of this testing, they are different one, right? When it comes to the exploratory, our objective is to learn the functionality of application. When it comes to the ad hoc, its purpose is to find out the corner cases with having already knowledge of particular application, right? And when it comes to the monkey testing, so in that situation we don't have knowledge, but based on our prior knowledge we are trying to find the corner cases. So these are the key differences as well as similarities in between three testings. Okay, then later on we move to the main two types of testing, that is the based on scenario. Okay, that is the positive as well as negative testing, right? Okay, fine. Okay, positive as well as negative testing. When we generally used to say it's a positive scenario, when we are considering the inputs or the data, testing data, right, as per the requirement, okay, within the specific range, that is called as your positive test data. And along with this positive data, whatever testing is performed, it is called as positive testing, right? Okay, we have covered a few examples related to password, then related to the client requirement, right? Surrounding to this we have covered two to three examples, right, related to positive and negative. Okay, once we done with the positive and negative side, then we have seen one of the important terminology, that is what is end-to-end testing, right? So in the end-to-end testing will be testing out the entire flow of your particular application. That is when it comes to the any basic mobile application. So basically what we are doing, we are logging the app, then we are searching for specific contact, then we are typing up the amount, then typing up the pin and sending the particular amount. Once the amount is sent up, right, we used to get the message as well as report for a particular transaction, right? And later on we can log out the application. So yeah, these are the some of the examples of end-to-end testing scenario on a high level we have covered up, right? Okay, so yeah, moving ahead, we from today we'll be starting with the actual test case design techniques. Okay, so these are the test case design techniques we are going to use for our testing projects, right? Okay, so yeah, let me expand this as well. Okay, fine. So the PDF doc is visible, guys, right? Can Yes, No, sir. sir. Yes, yes, yes. okay, okay, fine. Yeah. Okay, might be guys delay from your side. Yeah, please wait, it will get visible. Okay, yeah, fine, sure, let's continue. Thank you. Okay, so yes, today we are going to cover few testing techniques, right? Test data or test case designing techniques. This is our main job, right? During performing testing, before performing testing, we need to have testing documentation with us, right? So for that purpose, basically we can have this testing documentation. Okay, so for this we need some techniques, we need some processes, right, using which we can perform or we can create the test cases. Okay, let's say test design techniques are used to prepare data for testing. Okay, okay, so whatever data like input data in case of login functionality checking, और जब भी हमें कोई login functionality test करनी है तो वहाँ पे हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड चाहिए, राइट? सो इन दैट सिचुएशन हमने जैसे कल पॉजिटिव और निगेटिव के विथ रिगार्ड हमने बात की थी कि वैलिड डेटा क्या रहेगा, इनवैलिड क्या रहेगा, राइट? पॉजिटिव साइड पे कौन सा डेटा हो सकता है, नेगेटिव साइड पे लाइकवाइज वहाँ पे हमने डेटा सेट क्रिएट किए थे, टेस्ट डेटा क्रिएट किया था, राइट? सो वही टेस्ट डेटा, फॉर एग्जांपल वो जो पर्टिकुलर रेंज थी फ्रॉम 0 to 999, तो कितने सारे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है, राइट? पॉजिटिव साइड पे है, नेगेटिव साइड पे है, तो उतने सारे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हम नहीं ट्राई कर सकते, राइट? फ्रॉम बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, और देर विल बी इनफाइनाइट नंबर्स, राइट? सो हमें
कुछ तो स्पेसिफिक टेक्निक चाहिए यूजिंग विच वी एबल टू validate entire range. So for that purpose reduce the data. स्पेसिफिक रेंज के लिए हमें हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ डेटा रहेगा एंड वन मोर इम्पोर्टेंट मोर टेस्ट कवरेज। ओके, जो भी हम पर्टिकुलर इनपुट टेस्ट कर रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर टेस्ट केस टेस्ट कर रहे हैं, उसके सराउंडिंग हम मोर कवरेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट डिजाइन टेक्निक। ओके, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे देखिए, विथ मिनिमम टेस्ट डेटा टेस्ट कवरेज शुड बी मैक्सिमम। व्हाट डज इट मीन? ओके, इसका सिंपल मीनिंग है, फॉर एग्जांपल हमें लॉगिन फंक्शनलिटी चेक करनी है, तो वहां पे हमने कॉम्बिनेशन बनाए वैलिड यूजर नेम वैलिड पासवर्ड, वैलिड यूजर नेम इनवैलिड पासवर्ड, राइट, देन इनवैलिड यूजर नेम वैलिड पासवर्ड, likewise and invalid। so likewise हमने 4 सिनेरियो डिराइव किया, राइट, फॉर लॉगिन फंक्शनलिटी। अगर हम बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कोई नंबर कॉम्बिनेशन है, अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन है, तो वहां पे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनते हैं, राइट। सो इन दैट सिचुएशन फॉर टेस्टिंग पर्पस हमें मिनिमम टेस्ट डेटा रखना है और मैक्सिमम जो भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेंज है वो कवर अप करना है, राइट। तो वो कैसे कवर करना है हम देखते हैं, राइट। हेंस वी आर यूजिंग टेस्ट डिजाइन टेक्निक। इसीलिए हम टेस्ट डिजाइन टेक्निक यूज करते हैं, जिससे हमें मिनिमम डेटा के साथ मैक्सिमम टेस्ट कवरेज मिले। ओके, चलो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स। क्वेश्चन सिंपली, मतलब सराउंडिंग टू दिस क्वेश्चन सिंपल रहेगा, व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट केस और टेस्ट डेटा design techniques? Okay, so in that situation we should know these main important test design techniques. First one is ECP, which stands for your equivalence class partitioning. Okay, second one is your BVA, which stands for boundary value analysis. Third one is the decision table based testing. Okay, then state transition and error guessing. Okay, these are the types. In the upcoming slide we'll be covering each in detail. Okay, so there will be a question like what is the benefit why we are going for the test case design techniques? Say answer is simple, in order to reduce the test data and to have more test coverage. Okay, that one is the important statement. And second question will be there, what are the different type of test data design techniques or test case design techniques, right? Okay, so in that situation we'll be having answer. We have ECP, that is the equivalence class partitioning, then we have BVA, that is the boundary value analysis, then we have decision table, and then we have a transition, state transition, and then we have error guessing. So let's cover up one by one so that you'll have more clarity on that front, right? So yeah, first one we'll see here, and later on we'll uh, perform one example for the same as well. Okay, so equivalence class partition. Okay, ECP. So partition of data into various classes, and we can select data according to the class, and then we can perform test. So in a simple manner, here we are dividing a particular range into sub ranges. Okay, it reduces the number of test cases and saves the time for testing. Okay, it reduces the number of test cases, right, and also saves the time for testing. For example, we need to enter a number into this text box, and we are allowed to enter number from 1 to 500. Okay, and in this situation you'll see like there are 500 numbers, right, when we are going for whole numbers like 1 2 3 4 up to 500. So there are 500 test data for us. Okay, so it is not like, due to time constraint, it is not possible to try each and every number. Okay, so instead of that, in such a requirement we are going for equivalence class partitioning. अगर इस टाइप की रिक्वायरमेंट है तो देन हम ECP यूज करते हैं। तो कैसे यूज होता है देखिए, यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल टेस्ट डेटा है विदाउट कोई भी टेक्निक यूज करके, राइट, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, हमें 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड अप टू 500 हमें 500 नंबर ऑफ टाइम्स कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ेगा, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू द ECP, हम पर्टिकुलर रेंज को डिवाइड अप करेंगे। कैसे देखिए, हमें डेटा स्टार्ट करना है 1 से, राइट, सो दैट बिफोर 1 जो एक स्पेसिफिक रेंज रहेगी। फॉर एग्जांपल हमने जो भी क्लास पार्टीशन करना है उसकी लेंथ या उस
उसका ब्रैकेट रखा है 100 फॉर एग्जांपल, तो बिफोर 1 वी आर कैप्चरिंग वन रेंज दैट इज 0 to -100, राइट? देन 1 to 100, 100, 101 to 2, लाइकवाइज हमने 100 नंबर के कॉम्बिनेशन का एक पर्टिकुलर क्लास बना दिया, राइट? ओके, एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्लास हम एक कोई भी रैंडम नंबर पिकअप कर सकते हैं, लाइक फ्रॉम 0 to -100। अगर हम वो पर्टिकुलर नंबर वैलिडेट करते हैं, इट मीन्स ये विद इन दिस पर्टिकुलर रेंज कोई भी डेटा अगर हम पुटअप करते हैं वहां पे, तो वो वर्क करेगा, राइट? So for 100 number of combinations, we are just capturing one data. Okay, any data in between 1 to 100, any data in between 100 and 200, 101 and 200, right? Likewise. Okay, सो यहाँ पे देखिए जो रिक्वायरमेंट है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 500, इसीलिए जो भी आपका डेटा विद इन दैट रेंज रहेगा ना, ऑल कंसिडर एज वैलिड डेटा, and whatever data we are taking up out of the range is called as invalid data, and hence the testing done with this data is the positive, and like out of the range testing done is the negative testing. Okay, so see, for this example, like in a normal way हमें 1 to 500 numbers put up करने पड़ेंगे, right? But when it comes to the, one moment guys, okay, but when it comes to the ECP हमारे पास सिर्फ रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस यहाँ पे क्रिएट हुए, लाइक -50, 30, 170, 250, likewise. Okay, limited number of combination हुए, it is a physically possible or it is a not time consuming, right? Instead of testing for 1 to 500, इन अ सिंपल जो भी हमें नंबर की रेंज है, पर्टिकुलर रेंज को हम इन अ क्लास डिवाइड अप करेंगे, एंड इन बिटवीन दैट कोई भी एक नंबर पुट अप करेंगे यहाँ पे एज अ फॉर टेस्टिंग पर्पस, एंड अगर हम आउट ऑफ द रेंज चेक करते हैं तो दैट वन इज द इनवैलिड टेस्ट डेटा, एंड विद इन द रेंज दैट इज द वैलिड टेस्ट डेटा। ओके, ओके, सो लेट्स टेक एन वन अनदर एग्जांपल। अभी हमने जस्ट नाउ नंबर का एग्जांपल देख लिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर अल्फाबेट्स। हमारे पास एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है जहाँ पे हमें नेम एंटर करना है यूजर का, राइट? और कोई भी फर्स्ट नेम एंटर करना है। सो इन दिट सिचुएशन रिक्वायरमेंट में हमें है कि लाइक इट इज ओनली अलाउिंग अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स मीन्स आपके A to Z and small a to Z, right? Okay, so in this situation, see, we have two ranges only. One is from your capital A to Z and another one is from your small a to Z, right? So this both type of data are considered as one class, and out of this class you can pick up any number in a capital letters. Out of this particular class A to Z, you can pick up any number from small a b c, any number you can pick up, any combination. Okay, one particular combination. Okay, so the data within the given requirement range is the valid data, and out of this only alphabets are allowed, right? Out of this there are numbers as well, special characters as well, spaces as well, right? So for a particular data we can say it's a negative test data, right? And we'll be using it for negative testing, right? We can also have different data from special characters, then we can have data from the numbers as well, and space as well. There will be a space in between different data, right? Or alphabets as well. Okay, so these all combination comes under your invalid data, and this comes under your valid data which is within the range. Okay, hence ECP, that is the equivalence class partitioning, is known as value check technique. Okay, because here we are morely concentrating on the value, right? Okay, within the particular range. Okay, it is mainly checks, well, it is mainly checks for value. Okay, it also classify, divide the partition data into multiple classes, right? And out of these classes we are picking up only single data. Okay, so yeah, this is on the ECP. Okay, okay, so tell me, yeah, in case of ECP, let's take an example. Okay, example for the practice. For example, we have given the range from 1 to, for example, 1000. Okay, we have given an, or else what I will do, I will keep small. Okay, we have given range 1 to 100. Okay, so we need to go for ECP. So we need to divide it, right? Guys, keep on.
Okay, so here we need to divide this particular into the different classes, right? For that we have decided to have equal partitioning size of 10. Okay, so we'll have a difference of 10. So tell me different subclasses for this. 1 to 1 to 10. okay, 1 to 10, okay, then 10 11 to to 11 to 20. 20, okay, 10 to fine, 30, 10 to 21 to 21 to 30. 30. 30, Okay, likewise last, tell me the last one. Yeah, 91 to 100. 91 to 100. right, perfect, 91 to 100. right. Okay, 91 to 100, right? So 100. the yeah, this one is the range given to us, this one is the requirement. So this all data range will be your valid data range or positive data range, right? So out of this also, like from the negative side, tell me the range here. Yeah, from 0 to minus 1 minus Minus 10, Minus minus 1. 10, minus 10, minus 10, guys. Okay, because we need a size of 10, right? Okay, okay so okay okay from 0 to minus 10, and from like here on the positive side, tell me the range. 101 to 101 to 110, 1 right? 1 Perfect. Okay, so yes. Okay, so yeah, this will be your invalid data because it's out of the range, right? Invalid data. Okay, fine. And this one is also invalid data, right? Invalid. And whatever the data within range, that one is the valid. Okay, chalo, now so tell me, in between 0 to minus 10, we can take any data. For example, minus 5 we can take for testing purpose. Okay, from 1 to 10 you can take any random number, like 4 we are 5. taking. Yeah, 4 we are taking. From 11 to 20 we can take 17, for example. 17 Okay, from 21 to 30, for example, let's take 28 23. Yeah, or 28, no issues. Okay, and from this 91 to 100, let's take an example of 99, for example. Okay, and yeah, from the invalid range, let's take an example of 105. Okay, okay, so in this situation, this will be your test data. Okay, and for checking this particular input, you'll be entering -5, 4, 17, 28, 99 and 105. So this will cover your entire range from 1 to 100, and also out of the negative side as well it will cover. So you don't need to enter like 1 to up to 100, as well as on the negative side as well as on the positive sides. Clear है? इतना ही डेटा हमें इंटर करना है फॉर टेस्टिंग. सो दिस वन इज योर टेस्ट डेटा, valid test data within the range, and out of the range is your invalid test data. Okay, clear है? Okay, let's take another example as well. This needs to be clear. Okay, पार्टीशन कितना करना है क्या करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड है ना. पूरा यस यस हमारे टेस्टिंग एज ए टेस्टर हमारे ऊपर डिपेंड है. जितना भी रेंज रहेगा ना, आप ट्राई कर सकते हो उसको पर्टिकुलर इक्वली डिवाइड करने में. ओके, इक्विवेलेंस, इसीलिए उसको इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग बोलते हैं. 10 का ले लो 20 का रेंज ले लो इक्वल लेना है खाली वो यस हमारे ऊपर डिपेंड है. yes yes right, perfect. yes sir. Okay, okay, similarly there is another one requirement. For example, हमें first name enter करना है. Okay, and first name के लिए requirement है, we need only A to Z. Okay, small A to Z, sorry, small A to Z letters only. We are accepting only small A to Z लेटेस्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैं बात करता हूँ तो अतुल हो गया, राइट, श्याम हो गया, फॉर एग्जाम्पल दीज आर द नेम्स, राइट, एंड दीज आर ऑल स्मॉल लेटर नेम्स, राइट, एंड it will start from A to Z. It can have using small A to Z you can create any number of combination, right? Okay, so for this you need to check out of the range as well. So these all are your positive data, correct? Yes. This one is your positive data. Okay, positive data or valid data within the range, and out of the range, like we can have numbers, right? Out of the Capital A range to Z. yes, we can have capital letters as well, right? नंबर Okay, number. Then we have special, yes, स्पेशल special कैरेक्टर characters, right? Then we have white spaces, right? White spaces, yes. Okay, likewise. Okay, so for numbers you can take any random combination, 1 2 3 4 5. Okay, any random combination you can check. For capital letter as well, similar, you can check any random combination. Okay, for special character, you know what are the different special character, at the rate, hash,
These are the different special character you can check out. And when it comes to the wide spaces, you can use any combination, right? And you just need to give space in between, right? So these are the, yeah, these are the invalid data. Okay, these are the invalid data. Fine, these are the invalid data, and whatever data within the your specific range is the valid. Clear on the ECP side? Hello? Yes, sir. Yes, Okay, yes. Yes, sir. okay. Yeah, fine, perfect. Sure. Let's continue. Okay. Yeah. So yes, yeah, with respect to ECP, we just need to make a class, and from that specific class, equal partition class, we need to choose only specific value, data value, in order to test the scenario, right? Or our test case. Okay. So yeah, this one is from the your ECP, that is the equivalence class partitioning. इसके नाम में ही पूरा simple meaning है इसका. Equivalence means equal partition करो, right? And उसके छोटे छोटे क्लास बनाओ इक्वल वाले, एंड विद इन दैट पर्टिकुलर क्लास आपको डेटा लेना है फॉर द टेस्टिंग पर्पज, एंड विद इन द रेंज is your positive, and out of the range is your negative test data. Okay, fine. Okay, second one testing technique is, guys, BVA, boundary value analysis. Okay, now here in this technique we'll be checking for boundaries of your inputs. Okay, we'll see here we will be checking for boundaries of inputs, whatever input we are trying to put as a data, right? As a test data, we are cross validating against that boundaries. Okay, for example, we have one text box input on website or application, enter your age. Okay, so age can be a number only, right? Age can be into the number. For example, for this requirement, only digits are allowed, and only 18 to 35, right? This age group digits are allowed. Okay, so in that situation, what we'll be doing, okay, in that situation, if we want to go for boundary value analysis, okay, we can go for minimum value. What is the minimum value we have given as a requirement? 18. Okay, then we can check for the maximum value, that is also given, that is the 35. Okay, these two values are given, sorry, and based on this value, what we can do, we can add 1 into your minimum value. It stands 19. We can subtract 1 from your minimum value, it will give us a 17. Okay, then similar goes to max. We can add 1 value and we can subtract minus 1 value. So these are the 6 simple combinations for your boundary value analysis. You just need to do, you just need to check for this 6 combination: minimum value, min plus 1, min minus 1, on the same on the max side, max plus max, max plus 1, max minus 1. Okay, and whatever the data within your range, that is within your 18 number to 35, that is the positive data. See here, 18 is also within a range, hence it's a positive data and your test case will get fast. Okay, 35 is also your within a range. Okay, your test, like, this is as of now, you'll consider only valid data, invalid pass fail we'll see into the later part. Okay, so 19, it is also within the range, so that it's a valid data, right? 36 is it is the out of the range, so that is the negative data. 17 is out of the range, hence it is also negative test data. 34 is your within the range, hence it is a valid data. Likewise, we can have 6 combination. Some of the data are valid, some of the data are invalid. Okay, so simple, that one is the boundary value analysis. Okay, in case of BVA, we are considering these equations only: minimum value, min plus 1, min minus 1, max, max plus 1, max minus 1. Perfect. Okay, so yeah, any question here, guys? Simple है. इसका example करते हैं. Let's see one example. Okay, sure. Okay, so the second testing technique type is your BVA, that is the boundary value analysis, right? Okay, and during this BVA, we are checking for 6 combination: min plus 1, then min minus 1, yes, max, then we have max plus 1, and then we have max minus 1. Okay, Max minus 1.
let's take an example. For example, we have given a range from 1 to 20. Okay, Sir, voice 1 to आपका 10. Okay, sorry, 1 to 20. We have given a range of 1 to 20. So guys, tell me the values. Minimum value is 10. 10. 10 is the minimum value. Okay. Mean plus 1. Yes, tell me the answer. 11. 11. Right. 11. Mean minus 1. 9. 9. Perfect. What is the maximum value? 20. 20, right? And what is the max 21. plus 1? 21. And what is the max minus 1? 21. 19. 19. Easy, guys. Likewise, we need to create 6 combination and we are going to only test these combinations. Okay. Or else we have to check in between all values of 10 to 20 as well as out of the boundary value as well, right? So yeah, here we are only validating the boundaries of your specific input range, right? So that is called as boundary value analysis, and this 6 data we can consider as our test data. Out of these, the numbers which are within the range, okay, are the positive test data, and the numbers which are out of the range are negative test data. Okay, 10 is your within range, hence it's a positive test data, right? 11 is also positive, sorry, I'll just write positive. Okay, 11 is also positive. 9 is out of the range, hence it's a negative data. 20 is also within the range, hence it's a positive. 21 out of the, it's a negative. And when it comes to 19, it's within Positive. range, hence positive, right? Likewise, you'll have your 4 cases for positive test data and 2 cases for your negative test data. Okay, you'll test within that particular case only. Okay, fine. Clear, guys, on the BVA as well? Hello. Hello. सर Yes. हेलो Yes. BVA 9 मिनिमम जो है ना उसमें मैं 9+1 लिया तो वहां पे सर हाँ, तो हमें मीन और मैक्स की सराउंडिंग टू रिक्वायरमेंट कैप्चर करना है ना। तो इस सिचुएशन में आपका मीन क्या है रे? इस सिचुएशन में मीन तो 10 है आपका, एंड मैक्स क्या है आपका? मैक्स 20 क्या है? 20 है, राइट? सो 20. यस, सराउंडिंग टू दैट हम मीन और मैक्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ना कि 11 को आगे कंसीडर कर रहे हैं, 9 को आगे कंसीडर कर रहे हैं। ओके, मीन स्टैंड्स फॉर योर 10, max stands for your 20. We are adding 1 into the mean, we are subtracting 1 from the mean, not from these numbers. Okay, and when it comes to the max, we are adding 1 into the max, here 20, we are subtracting 1 from the 20 only. Okay, fine. Okay, हेलो yes. सर BVA अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए नहीं यूज होगा क्या फिर? हम उसमें प्लस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना? नहीं सर यस, मोस्टली है ना ऑन न्यूमेरिक साइड ही यूज होता है। अगर हमें आप जो अल्फाबेट के लिए ये कर रहे हो, एग्जांपल देख रहे हो, राइट, उस सिचुएशन में आप है ना ये पर्टिकुलर क्लास, उसका क्लास बना सकते हो। मतलब आपकी जो भी अल्फाबेट्स है वो कैपिटल और स्मॉल दोनों भी आपको चाहिए, तो इन दैट सिचुएशन हियर you'll have a range of small a to z and capital A to z. This will be your positive side test data side, and other rest of the combinations will be your negative test data side. Okay. मींस Okay. टेस्ट केस टेक्निक हमारे मींस हम मींस हाँ, हम डिसाइड कैसे करते हैं? हैं। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। आपका Okay. अगर रिक्वायरमेंट सराउंडिंग टू नंबर्स है, या आपका रिक्वायरमेंट सराउंडिंग, फॉर एग्जांपल सिंपल आप सोचो ना, आपका यूजर नेम है या पासवर्ड है, तो यूजर नेम है तो आइडियली हम वहाँ पे लेटर्स ही रखते हैं, राइट? बट अगर पासवर्ड की बात आती है तो वहाँ पे हमें अल्फाबेट भी चाहिए, नंबर भी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी चाहिए। तो ये सभी कॉम्बिनेशंस आपके क्या हो गए, एज अ पार्ट ऑफ क्लास हो गए, राइट? उसको आप पर्टिकुलर क्लास में डिवाइड अप कर सकते हो, राइट? एंड वो सारे पॉजिटिव साइड पे आएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट वैसी है। ओके, एंड जो भी आपका प्लेन रहेगा डिटेल्स, वाइट स्पेसेस वगैरह, दैट आर नॉट अलाउड इन सम ऑफ द केसेस। ओके, सो वो नेगेटिव साइड पे रहेगा आपका। Okay. Fine. Okay. So these are the two important techniques, guys. One is your ECP, equivalence class partitioning. Here we are deriving a class, right, based on the specific range, right? And within a range is your positive test data, and out of the range is your negative test data. Okay. When it comes to the boundary only analysis, we are making a 6 combination: mean, mean plus 1, minus 1, max,
max plus 1, max minus 1. So these are the 6 combinations we are creating up as a part of your test data under BVA, right? Yes. So yes, so these both the techniques we are implementing for our input domain testing. Okay, ECP and BVA, both the techniques we are implementing for checking the input domain testing. What does it mean? The value which will verify the text box or input field, आपकी वेबसाइट पे, मोबाइल एप्लीकेशन पे, जहाँ पे भी आप डेटा इंटर करते हो, यूजर नेम, पासवर्ड, कोई भी फॉर्म फिलअप करते हो, तो दैट वन इज योर इनपुट फील्ड, करेक्ट? सो विद इन दैट इनपुट फील्ड आप जो भी डेटा इंटर कर रहे हो, उसी डेटा को इंटर करने के लिए जो भी हमें टेस्ट डेटा चाहिए, राइट, टेस्टिंग पर्पज के लिए, वो टेस्ट डेटा हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दिस टू इंपॉर्टेंट टेक्निक, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग एंड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस. Okay, so these are the two techniques we are basically using mostly for the test data creation in case of input text box or input fields. Okay, okay, so this is the scope related to your input box. जहाँ पे भी input box है वहाँ पे हम particular techniques का use करेंगे. Later on, yeah, one of the important technique is decision table. Okay, so in some of the example, for example input box का तो हमने देख लिया, जहाँ पे यूजर नेम पुटअप करते हैं, जहाँ पे पासवर्ड पुटअप करते हैं, राइट? सो उसका हमने जस्ट नाउ एग्जांपल देख लिया. बट व्हाट अबाउट कि कई केसेस आते हैं ना जहाँ पे हमें डिसीजन बेस पे करना पड़ता है. ओके, लेट्स सी विद एग्जांपल. डिसीजन टेबल इज आल्सो कॉल्ड एज कॉज एंड इफेक्ट. ओके, विल सी इनटू द डायग्राम itself. Okay, so this technique will be used if we have more condition corresponding to actions. Okay, we'll see. Decision table technique, we deal with the combination of inputs. Okay, let's go to the condition. Okay, from here you'll able to understand. Okay, so see, take an example of transferring money online to an account which is already added and approved. Okay, हमें क्या करना है, हमें पर्टिकुलर यूजर के अकाउंट में मनी ट्रांसफर करना है, राइट? कंडीशंस क्या क्या है देखिए हमारे पास, कि पर्टिकुलर जो अकाउंट है वो ऑलरेडी एडेड होना चाहिए एंड अप्रूव होना चाहिए. तो यहाँ पे हियर कंडीशंस टू ट्रांसफर द मनी, कौन कौन से कंडीशन है यहाँ पे? अकाउंट ऑलरेडी अप्रूव होना चाहिए, दिस वन इज द कंडीशन. ओटीपी मैच होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो कंडीशन, एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बैलेंस होना चाहिए. तो यहाँ पे हमारे पास थ्री कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस, सॉरी थ्री कंडीशंस है. ओके, एंड बेस्ड ऑन दिस कंडीशन हमारे पास सर्टेन एक्शंस है. ओके, अगर तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं देन एंड देन ओनली आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा. उसमें से अगर आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट लेस है जो भी आप ट्रांसफर करना चाहते हो, इन दैट सिचुएशन आपके लिए डिफरेंट मैसेज रहेगा. अगर इन केस वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन आपका सस्पिशियस है तो वो ब्लॉक भी हो जाता है, कैंसिल भी हो जाता है, राइट? सो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, सी गाइस, दिस थ्री आर द इंपॉर्टेंट कंडीशंस एंड बेस्ड ऑन दिस एक्शन कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, राइट? सो ऑन दैट फ्रंट विल बी यूजिंग डिसीजन टेबल. ओके, हियर यू विल हैव मोर क्लैरिटी. फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमने जो एग्जांपल किया, कंडीशन 1 है. ओके, कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3, हमारे पास थ्री कंडीशंस थे, राइट? वन इज अकाउंट इज अप्रूव, ओटीपी मैच एंड सफिशिएंट बैलेंस. तो उसी के सराउंडिंग हम जो भी टेबल क्रिएट अप करते हैं, इट इज कॉल्ड एज डिसीजन टेबल. हाउ? टेस्ट केस 1 के लिए हम कंसिडर क्या कर सकते हैं, देखिए आपका अकाउंट अप्रूव है, आपका ओटीपी भी मैच हो रहा है एंड आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस भी है. देन एंड देन ओनली आपको एक्शन फर्स्ट परफॉर्म करना है, मतलब आपके एप्लीकेशन में मनी ट्रांसफर का एक्शन एग्जीक्यूट होगा, राइट? सो दिस वन इज योर वैलिड टेस्ट केस. व्हाई? बिकॉज ऑल द थ्री कंडीशंस आर मैचिंग, देन एंड देन ओनली we are going to transfer the money or application is going to transfer the payment, right? Okay, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आपका फॉल्स है, मतलब आपका अकाउंट ऑलरेडी एडेड है, ओटीपी भी मैच है, बट आपके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, सॉरी. सो इन दैट सिचुएशन आपको मैसेज क्या शो होना चाहिए? insufficient balance, right? So this action will get executed. When we have OTP mismatch, so in that situation our transaction will get failed, right? So this situation will occur. Okay, when like we OTP is also not matching and there is no sufficient amount in the account, at that situation also your transaction is going to fail. Okay,
नेक्स्ट थिंग, आपका अकाउंट ही अप्रूव नहीं है, सो इन दैट सिचुएशन कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, राइट? आप पर्टिकुलर यूजर को पेमेंट ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, दैट वन इज योर invalid scenario. Okay, so the only valid scenario is nothing but all the conditions are matched, and then your actual action is going to perform. But if any one of the condition or more than one condition is failing, so in that situation remaining action is going to perform. Okay, so this is what your decision based technique. ये बेसिक डिसीजन टेबल टेक्निक, ये आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, कोई बता सकता है? केस केसेस में। यस, आप जहाँ पे पेमेंट का ऑप्शंस आपको आता है, एटीएम से पेमेंट करो, डेबिट कार्ड से करो, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, राइट? वहां पे आप ये टेस्ट डिसीजन टेबल ट्राई आउट कर सकते हो. कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है डिसीजन टेबल में. ओके, सिंपल है. डिसीजन टेबल आप कब क्रिएट करोगे? फॉर टेस्टिंग पर्पस. ओके, ये क्रिएट क्यों करना है? बेसिकली हमें डिफरेंट हमें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, राइट? हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि आपको है ना पेमेंट ट्रांसफर करना है. फॉर एग्जांपल आपका एबीसी ऐप है, एबीसी ऐप से आप पेमेंट ट्रांसफर करना चाहते हो, राइट? ओके, या ओके, लेट मी गो टू द नोटपैड. या ठीक है, इसका नाम है डिसीजन टेबल. ओके, डिसीजन टेबल टेक्निक. ओके, सो इसमें है ना सिंपल है, आपकी रिक्वायरमेंट है. फॉर एग्जांपल आपकी जो रिक्वायरमेंट है, ओके, रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास कि आपको एक पर्टिकुलर सिनेरियो चेक करना है. ओके, पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जहाँ पे आप अकाउंट चेक कर रहे हो. ओके, अकाउंट एडेड है क्या, ये चेक करना है आपको. कंडीशन है रिक्वायरमेंट की. ओके, देन ओटीपी मैच होना चाहिए, ओटीपी शुड मैच, राइट? ये भी कंडीशन है. एंड देन अगर ओटीपी मैच होता है आपका पर्टिकुलर, राइट, सो देन वन मोर थिंग इज गोइंग टू चेक सफिशिएंट बैलेंस. बैलेंस भी आपके अकाउंट में होना चाहिए, राइट? सो दिस आर द थ्री इंपॉर्टेंट, मतलब आपका पर्टिकुलर अकाउंट एडेड होना चाहिए, आपका ओटीपी मैच होना चाहिए ना, आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए. तो ये कंडीशंस है एज अ पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट. तो इसी के बेस पे है ना आपको डिफरेंट आउटपुट्स हैं, जैसे हमने देखे थे. क्या आउटपुट था? पेमेंट ट्रांसफर हो गया, सिंपल. एक तो पेमेंट ट्रांसफर, ये आपका पर्टिकुलर एक्शन या आउटपुट बोल सकते हो. देन अगर आपका ओटीपी मैच नहीं हुआ, राइट, इन केस ओटीपी मैच नहीं हुआ तो आपको पर्टिकुलर मैसेज आना चाहिए, फेल ट्रांजेक्शन. सिंपल रखते हैं यहाँ पे, फेल ट्रांजेक्शन. ओके, फेल ट्रांजेक्शन, फाइन. एंड इन केस आपके अकाउंट में बैलेंस कम है तो आपको मैसेज दिखना चाहिए इनसफिशिएंट बैलेंस. okay okay, so these are the three conditions. Okay, so abhi is based on these conditions and based on these actions. Okay, these are the conditions and based on this हमें ये actions check करने हैं. तो combination क्या क्या हो सकती है? देखिए, आपके अकाउंट एडेड हो सकता है, ओटीपी मैच हो सकता है, सफिशिएंट बैलेंस हो सकता है. अगर तीनों भी कंडीशन मैच होते हैं देन एंड देन ओनली हम पेमेंट ट्रांसफर होगा, राइट? सो दिस वन इज योर फर्स्ट टेस्ट केस, जिसमें आप अकाउंट भी आपका एडेड होना चाहिए, ओटीपी भी मैच होना चाहिए एंड सफिशिएंट भी बैलेंस होना चाहिए. तो इसको आपको रिप्रेजेंट करने के लिए एक टेबुलर फॉर्मेट चाहिए, इसीलिए वो टेबल फॉर्मेट में बनाते हैं हम बेसिकली. ओके, सेकंड कंडीशन है आपकी, फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट एडेड है बट ओटीपी नहीं मैच, बैलेंस भी है. इन दैट सिचुएशन हमें मैसेज क्या आना चाहिए? फेल ट्रांजेक्शन. सो दैट वन इज योर सेकंड टेस्ट केस. ओके, अभी और एक, फॉर एग्जाम्पल आपका अकाउंट एडेड है, ओटीपी भी मैच है बट आपके अकाउंट में बैलेंस ही कम है, तो इन दैट सिचुएशन आपको मैसेज क्या आना चाहिए? इनसफिशिएंट बैलेंस, राइट? सो लाइकवाइज बेस्ड ऑन डिसीजन सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, राइट? सो अगर हमें उनको रिप्रेजेंट करना है तो हमें किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? यस, टेल मी गाइस. हेलो, वॉइस आ रही है? यस सर. हाँ, तो देखिए मैंने नोटपैड या कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल में अगर राइट अप किया तो कितना सारा हमें कॉम्बिनेशंस करता बैठना पड़ेगा, राइट? इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम टैबुलर फॉर्मेट बनाते हैं जिसमें टेस्ट केस के
यस एक्सेल में ही बनेगा बेसिकली। ये एक्सेल बनाते हैं जिसमें हम कंडीशंस पुटअप करते हैं ना, एक्शंस पुटअप करते हैं। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो देन कौन सा मैसेज आना चाहिए, मनी ट्रांसफर। ये दो ही कंडीशन सेटिस्फाई करती है, अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो शो करो नॉट सफिशिएंट बैलेंस। दोनों में से अगर ओटीपी मिसमैच है तो ट्रांजेक्शन फेल कर दो, राइट। दोनों भी मिसमैच है, ओटीपी भी नहीं मैच हुआ और बैलेंस भी नहीं है तो भी ट्रांजेक्शन फेल करो। एंड इन केस पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट ही नहीं है तो भी ट्रांजेक्शन फेल करो, राइट। लाइकवाइज हमें बेस्ड ऑन कंडीशन जो डिसीजन लेने हैं टेबुलर फॉर्मेट में एक्सेल में इजी रहेगा बनाना, राइट है। यस सर। यस इसीलिए हम डिसीजन टेबल बनाते हैं, राइट। क्योंकि टेबुलर फॉर्मेट में हम प्रॉपरली टेस्ट केस का डेटा क्रिएट कर सकते हैं, राइट। यहाँ से हमें सिंपली पता चलता है, अरे हाँ फॉर दिस केस तीनों भी अगर ट्रू है देन एंड देन ओनली मनी ट्रांसफर होगा, एल्स आपके अदर मैसेजेस शोकेस हो गए। सो दिस वन इज योर डिसीजन टेबल एग्जांपल और डिसीजन टेबल टेक्निक एग्जांपल। क्लियर है? Okay, okay, fine. So yeah, till now guys, see, we have covered input like equivalence class partitioning and boundary value analysis that applies to the input domain जहाँ पे भी text box है, जहाँ पे भी input हमें put up करना है। But when it comes to the some decision oriented कि जहाँ पे हमारे पास condition and actions है, in that situation हम एक tabular format में इस तरह से test data create कर सकते हैं, right? Okay. नेक्स्ट वन इसी का थोड़ा सिम और एक टाइप है, सिंपलेस्ट वन है, दैट इज द स्टेट ट्रांजिशन टेक्निक। यहाँ पे क्या था, देखिए दोनों में थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है। यहाँ पे कंडीशंस एंड एक्शंस थे, ओके, डिसीजन टेबल में, इसीलिए हमने एक्सेल फॉर्मेट में एक टेबल क्रिएट अप किया। व्हेन इट कम्स टू द स्टेट ट्रांजिशन टेक्निक, हम डायरेक्टली एग्जांपल के साथ देखते हैं, कोई है क्या? ठीक है, चलो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप है ना सिंपल एटीएम का एग्जांपल ले लो। आप एटीएम मशीन के एटीएम मशीन में जाते हो, राइट, एंड एटीएम पुट अप करके देन लेटर ऑन नेक्स्ट 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 हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो हर एक ऑपरेशन इज नथिंग पर योर स्टेट, ओके। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, ओके, लॉग इन करने के लिए पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, फॉर एग्जांपल एटीएम का एग्जांपल लेते हैं, ओके। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया एटीएम एटीएम पुट अप करके करेक्ट पिन के लिए, ओके। सो अगर आपका पिन करेक्ट है देन एंड देन ओनली आप लॉग इन होना चाहिए पर्टिकुलर एटीएम में या कोई भी वेब एप्लीकेशन में, ओके। अगर आपका लॉग इन मतलब आपने जो भी पिन एंटर किया है, जो भी आपने डिटेल्स यूजर ने पासवर्ड जो भी आपके डिटेल्स है, पिन आपने इनकरेक्ट पुटअप किया है, तो आपको कहाँ पे जाना चाहिए, सेकंड अटेम्प्ट ट्राई करने के लिए जाना चाहिए। होता है ना ऐसा एटीएम में, देखिए हमने फर्स्ट टाइम पिन एंटर किया, वो हमें रॉन्ग पिन बताता है, राइट, बट हमें सेकंड अटेम्प्ट करने के लिए भी वो चांस देता है, राइट। सिमिलरली हम सेकंड अटेम्प्ट भी ट्राई करते हैं एंड सेकंड अटेम्प्ट में अगर करेक्ट पिन पुटअप करते हैं तो हम कहाँ पे जाना चाहिए, होम पेज, मतलब पर्टिकुलर एटीएम का एक्सेस होना चाहिए। अगर इन केस पिन फेल होता है तो हम कहाँ पे जाना चाहिए, हमें थर्ड अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि अभी तक 2 अटेम्प्ट हम फेल हो चुके हैं। अगर थर्ड अटेम्प्ट में अगर हम करेक्ट डिटेल्स पुटअप करते हैं, करेक्ट पिन पुटअप डिटेल्स एंटर करते हैं, तो देन हमें कहाँ जाना है, होम पेज पे जाना चाहिए, राइट। अगर फिर भी लाइक आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स भी अगर हम फेल होते हैं, मतलब इनकरेक्ट पासवर्ड पुटअप करते हैं, तो इन दैट सिचुएशन हमें मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, योर अकाउंट इज ब्लॉक, प्लीज कॉन्टेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर और योर बैंक, ओके। सो यहाँ पे आपके पास है ना, मतलब क्या है, स्टेट से डिफरेंट डिफरेंट। अगर फर्स्ट स्टेट है, आपने सही पिन इंटर किया है, तो आप डायरेक्टली कौन से स्टेप पे जा रहे हो या स्टेट पे जा रहे हो, होम डायरेक्टली पेज। लॉग इन होम पेज के, राइट। इनकेस आप फेल कर रहे हो ना, तो आप कहाँ पे जंप ऑन कर रहे हो, सेकंड अटेम्प्ट पे। सेकंड अटेम्प्ट में आपने अगर करेक्ट डिटेल्स पुट अप किया है, देन एंड देन ओनली आप होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, एल्स आप वापस से नेक्स्ट स्टेप के लिए जाओगे, राइट। एंड थर्ड अटेम्प्ट में भी अगर आप फेल होते हो देन ओनली आपका अकाउंट ब्लॉक होगा। सो जहाँ पे भी आपका अकाउंट लॉगिन है, फॉर एग्जांपल मोबाइल एप्लीकेशन में, बैंकिंग का एप्लीकेशन में, कौन से भी एप्लीकेशन में, वहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेंशन होती है। देखिए कई कई एप्लीकेशन आपका अकाउंट ब्लॉक करते हैं फॉर 10 मिनट्स, कई कई एप्लीकेशन आपका ब्लॉक करते हैं अकाउंट फॉर 1 आवर, कई कई एप्लीकेशन ऐसे है जो आपका अकाउंट का एक्सेस ब्लॉक कर देंगे अनटिल एंड अनलेस आप पर्टिकुलर एडमिन को या पर्टिकुलर बैंक को कांटेक्ट करते हो।
तो उस सिचुएशन में हमें कौन सा टेक्निक यूज करना है? स्टेट ट्रांजिशन टेक्निक। सिंपल। अगर फर्स्ट स्टेप सक्सेस होता है तो देन एंड देन ओनली आप होम पेज पे रिडायरेक्ट होगे, एल्स आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए जा सकते हो। सेकंड अटेम्प्ट पास होता है देन एंड देन ओनली आप होम पेज पे डायरेक्ट करोगे, एल्स आप थर्ड अटेम्प्ट पे ट्राई कर सकते हो। थर्ड अटेम्प्ट में भी पास मतलब आपका पासवर्ड करेक्ट है, देन एंड देन ओनली आप होम पेज विजिट करोगे, और एल्स आप का अकाउंट का एक्सेस ब्लॉक हो जाएगा। सो इन दिस सिनेरियो हम जो भी टेक्निक यूज करते हैं दैट इज द स्टेट ट्रांजिशन टेक्निक। क्लियर है? इट टोटली डिपेंड्स अपॉन रिक्वायरमेंट कि कितने नंबर ऑफ स्टेजेस बनेंगे, स्टेट्स बनेंगे। आप अगर दो ही अटेम्प्ट में फेल हो रहा है, आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, तो आपके दो ही स्टेट्स आएंगे, yes1 yes2। ओके, yes3 विल बी योर डायरेक्ट होम पेज एंड yes4 विल बी योर अकाउंट ब्लॉक मैसेज। क्लियर है? कुछ डाउट कंफ्यूजन इस पे? नो सर, क्लियर। एटीएम का सिंपल एग्जांपल बता दो, इन केस अगर आपको है ना इंटरव्यू बोलते हैं, पूछते हैं ना, तो सिंपल एटीएम आपने फर्स्ट टाइम एटीएम इंसर्ट किया, दैट इज द फर्स्ट स्टेट, राइट? अगर हमने करेक्ट पिन इंटर किया देन एंड देन ओनली हम होम पेज पे या पर्टिकुलर स्क्रीन पे लोड हो जाएंगे, राइट? अगर हमने करेक्ट किया तो सेकंड अटेम्प्ट पे के लिए हम ट्राई कर सकते हैं। सेकंड में भी फेल हो गया तो हम थर्ड के लिए ट्राई कर सकते हैं, थर्ड में भी फेल हो गया तो पर्टिकुलर कार्ड ही ब्लॉक हो जाएगा। लाइकवाइज दिस आर द स्टेट, एंड बेस्ड ऑन स्टेट हम उसका ट्रांजिशन कर रहे हैं। मतलब ट्रांजिशन इट मींस सिंपल, एक स्टेट से अनदर स्टेट में जंप ऑन करना, दैट्स इट। ओके, ठीक है। चलो इसका भी एक एग्जांपल करते हैं क्योंकि these are the important guys। ओके, yeah, we'll see one of the examples for state transition। so आपकी कंसेप्ट है ना थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, आपके पास फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट है एटीएम का ही करते हैं अभी के लिए जो किया था। ओके, एटीएम का है और यहाँ पे हमें ऑप्शंस है, 4 अटेम्प्ट्स अवेलेबल है। आप 4 अटेम्प्ट्स रॉन्ग अटेम्प्ट्स कर सकते हो। ओके, 4 रिक्वायरमेंट है बेसिकली आपकी, 4 अटेम्प्ट रॉन्ग कर सकते हो। अगर 5th अटेम्प्ट है तो आपका पर्टिकुलर कार्ड ही ब्लॉक हो जाएगा। ओके, कार्ड विल बी ब्लॉक। चलो, सो हाउ मेनी स्टेट्स विल बी देयर गाइज? yes1, टेल मी। yes2 कितने हो सकते हैं रे? 4 राइट, maybe 4। ओके ओके, आपके लाइक 4 अटेम्प्ट तो आपके करेक्ट है, रॉन्ग उसके लिए हो गए, राइट? yes 5 will be your actual home page। okay, right? And yes 6 will be your block state, right? अकाउंट ब्लॉक। yes, account और your card block, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कार्ड आपका। okay guys, keep on mute, there is some noise। okay, yeah, ओके आपका पर्टिकुलर कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, राइट? सो यस 1 स्टेट है आपके, यहाँ पे 2 चॉइस रहेंगे आपके, मतलब 2 सिचुएशंस हो सकते हैं। ओके, करेक्ट पिन एंड इनकरेक्ट पिन, राइट? 2 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। यस 1 स्टेप ने आपने अगर यहाँ पे करेक्ट पिन पुटअप किया है, ओके वैलिड, आई विल राइट वी। ओके, आपने करेक्ट पिन पुटअप किया है, राइट? ओके, आपने करेक्ट अटेम्प्ट किया था, देन ओनली आप कहाँ पे रिडायरेक्ट होने चाहिए डायरेक्टली? यस 5 पे, यस 5। राइट? यस 5 पे। आपने अगर रॉन्ग पिन पुट अप किया है तो कहाँ पे रिडायरेक्ट हो सकते हो आप? नेक्स्ट यस 2 पे। परफेक्ट। ओके, चलो इन अ सिमिलर फेज यस 2 पे भी आपने अटेम्प्ट, guys keep on mute, someone yeah making noise। okay, thank you। okay, yes 1 में सॉरी yes 2 में आपका अटेम्प्ट ओके है, पिन करेक्ट है, तो कहाँ पे रिडायरेक्ट होगा रे? यस 4। yes 5, yes 5 guys, होम पेज is here, right? yes 5 है। अगर इन केस वो फेल होता है तो कहाँ पे जाएगा? yes 3। परफेक्ट। ओके, सो चलो अभी मैं थर्ड अटेम्प्ट में हूँ, मैंने जो पिन पुटअप किया है वो भी करेक्ट है, तो कहाँ पे रिडायरेक्ट होगा? yes 5 पे। ओके, इन केस फेल्योर आता है तो देन एंड देन ओनली मुझे 4th अटेम्प्ट अलाउड है, इसीलिए मैं कहाँ पे रिडायरेक्ट हो सकता हूँ? yes 4। ओके, सेम गोज हियर एज वेल, राइट? अगर मैं yes 4 में अटेम्प्ट में अगर पास होता हूँ, मैं पिन अगर प्रॉपरली इंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं yes 5 पे रिडायरेक्ट हो सॉरी कहाँ पे yes 5 पे रिडायरेक्ट हो जाऊंगा, एल्स मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा रे? ब्लॉक हो जाएगा।
राइट, Yes, ब्लॉक हो जाएगा. block. Yes, so this one is your state, this one is your state transition technique. State Okay, transition technique. perfect. Okay, yes, so these are the different techniques, guys, based on like based on the type of requirement we will be implementing each टेक्निक सराउंडिंग टू दैट रिक्वायरमेंट. जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट आता है, देखिए हर एक में है ना आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस दिख रहा है. देखिए ईसीपी में आपके पास सर्टन क्लास की रेंज है, मतलब सर्टन रेंज है, उसको आप डिवाइड कर सकते हो इक्वली, राइट. नंबर्स की अगर बात करते हो, अगर हम लेटर्स की बात करते तो रादर देन अल्फाबेट्स हम अदर नंबर्स पे फोकस कर सकते हैं, कैपिटल स्मॉल लेटर्स पे, स्पेशल कैरेक्टर के, इनका भी हर एक का क्लास है, राइट. एंड विद इन दैट क्लास आप टेस्टिंग के लिए डेटा पुट अप कर सकते हो. ये हो गया आपका पर्टिकुलर इक्विवेलेंस ईसीपी, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग. आप अगर बीवीए पे फोकस करते हो ना, तो ये बेसिकली इनपुट टेक्स्ट डेटा के लिए है, मतलब मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम, मीन प्लस माइनस, मैक्स प्लस माइनस, खत्म, इतना ही है इस पे. ओके, अगर हम डिसीजन की बात करते हैं, डिसीजन टेबल की, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ कंडीशंस है एंड मल्टीपल नंबर ऑफ एक्शंस भी है. सो इन दैट सिचुएशन हमें टेबल पे फोकस करना पड़ेगा. अगर हम स्टेट ट्रांजिशन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे एक चीज कॉमन है, देखो गाइस, अगर हमारा जो भी मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है ना, उसमें अगर कोई चीज करेक्ट है, राइट, सो इन दैट सिचुएशन हमें एक कॉमन पॉइंट पे ही जाना है, राइट. एंड अगर फेल्ड है, तो इन दैट सिचुएशन ओनली हमें नेक्स्ट स्टेट पे जाना है. क्लियर है इतना? Yes. Yes, ओके sir. Yes, sir. ओके ओके फाइन, चलो. ओके, एंड या इसमें एक लास्ट वन ही इम्पोर्टेंट है इसमें, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, एरर गेसिंग. ओके, चलो. अभी तक हमने गाइस 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स देख लिए. फर्स्ट वन क्लास आपका हो गया ईसीपी, बीवीए, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस हो गया. ओके, देन आपका डिसीजन टेबल हो गया, देन स्ट्रेट ट्रांजिशन, एंड फिफ्थ वन इज द एरर गेसिंग. ओके, so error guessing is one of the important technique and it is used to find bugs in the software application based on testers prior experience. दिस इज द इम्पोर्टेंट कीवर्ड. ओके, एरर गेस कर सकते हो आप. कोई भी चीज का हम गेस कब कर सकते हैं, उसका कोई तो हमें लॉजिक पता होना चाहिए, उसके बिहाइंड का कोई तो लॉजिक पता होना चाहिए, राइट. सो फॉर दिस एरर गेस, फॉर द मेकिंग यूज ऑफ एरर गेसिंग टेक्निक, हमें प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये टेस्ट केस राइट करते टाइप, एग्जीक्यूट करते टाइप आपको पता चलता है. ठीक है, एरर गेसिंग वी डोंट follow any specific rules. Why? Because it changes person to person. For example, किसी person के पास 1 साल का experience है, किसी person के पास 2 years of experience है, right. And during that एक जो भी उनका प्रोजेक्ट है, ड्यूरिंग दैट प्रोजेक्ट उन्होंने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट किए, नंबर ऑफ एप्लीकेशन, लाइक नंबर ऑफ टाइम्स एप्लीकेशन के ऊपर अगर काम किया है, तो उनके पास बहुत सारे बग्स के आइडियाज रहेंगे, बहुत सारे बग्स पे उन्होंने काम किया रहेगा, राइट. सो इन दैट सिचुएशन उनको ऑलरेडी नॉलेज है उस चीज का, तो वहां पे एरर गेस टेक्निक यूज कर सकते हैं. डिपेंड्स अपॉन टेस्टर्स एनालिटिक स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द पर्सन. Some of the examples are follows. For example, submitting a form without entering values. Okay, हमें पता है कोई भी अगर हम फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उसमें अगर मैंडेटरी फील्ड है, तो वहां पे क्या आ सकता है, रे एरर शो होना चाहिए, राइट. कि आपने मैंडेटरी फील्ड यूजर नेम नहीं पुटअप किया, ईमेल आईडी नहीं पुटअप किया, मोबाइल नंबर नहीं पुटअप किया. सो दिस इज वन ऑफ द सिनेरियो, यू नो, कि यहाँ पे एरर आ सकता है. सो हमें विथ एक्सपीरियंस ही चीजें धीरे धीरे पता चलते रहेगी. ओके, एंटरिंग इनवैलिड वैल्यूज सच एज एंटरिंग अल्फाबेट्स इनटू द न्यूमेरिक फील्ड, जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल नंबर्स ही, मोबाइल नंबर्स में नंबर्स ही चाहिए, वहां पे भी आप कैरेक्टर पुट कर रहे हो, वहां पे भी आप मतलब अल्फाबेट पुट कर रहे हो, वहां पे भी आप स्पेशल कैरेक्टर पुट कर रहे हो. तो आपको पता है एज अ टेस्टर कि आप मतलब पर्पसफुली इनवैलिड डेटा वहां पे पुट अप करके फंक्शनैलिटी चेक कर रहे हैं, राइट. सो इट कम्स अंडर योर एरर गेस टेक्निक. क्लियर है इस पे भी? एरर गेस मीन सिंपल वर्ड, आपका जो जैसे जैसे है ना आप वर्कआउट करना चालू करेंगे ऑन द एप्लीकेशन ना, तो आपको पता चलता है कि यार यहाँ पे एरर आ सकता है, तो उसी सिनेरियो को लेके आप चेक करते हो. ओके, सो इन दैट सिचुएशन ये पर्सन टू पर्सन वेरी होता है, मतलब हर एक पर्सन का थिंकिंग अलग रहेगा, एनालिटिकल थिंकिंग फ्रॉम द टेस्टर पर्सपेक्टिव.